अब आ गया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो काफी लोग पूछते हैं कि ग्रोथ ऑफ अ पीएम हायरार्की में क्या होता है, राइट? सबसे पहले जब तुम पीएम बनना चाहते हो, राइट, फॉर द वेरी अर्ली स्टेज स्टूडेंट, द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट. अब प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या होता है? A product analyst is someone who generally takes insights from product analytics tools. What are those product analytics tools? Like CleverTap, like MoEngage, like WebEngage, like Mixpanel, like Amplitude, and supports the PM to discern user behavior. यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट एनालिस्ट कोई फीचर नहीं बनाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल को देखेगा, उसमें से डेटा निकालेगा, एक्सेल में उसको डिसर्न करेगा, पीएम की बात सुनेगा और पीएम की बात सुनने के बाद ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग द यूजर एक्चुअली डू अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो द प्रोडक्ट एनालिस्ट विल नॉट वर्क ऑन फीचर स्पेक्स, rather will work on features and look at product funnels, right? A product analyst are different from business analyst. Product analyst और business analyst अलग अलग हैं. ये अलग इसलिए है क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट फोकस अ लॉट मोर ऑन बिजनेस मेट्रिक्स. लाइक फ्लिपकार्ट में जो बिजनेस एनालिस्ट है वो देखेगा सेल कितनी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट एनालिस्ट ये देखेगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या लॉगिन फ्लो कैसे काम कर रहा है, या सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसे काम कर रही है. अ प्रोडक्ट एनालिस्ट विल स्टार्ट लुकिंग एट फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम अ प्रोडक्ट फनल स्टैंडपॉइंट, राइट? A product analyst does not work on wireframes, but setting up the data infra for the PM team. So you will be the one who will be making the reports. You will be the one who will be taking care of building funnels in the product analytics tools. You will be the one who will take out data from a SQL table and try to come up with insights. They can also work with the data science team and learn query languages for product funnel interactions. That is extremely important. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं ना, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक प्रोडक्ट एनालिस्ट के स्किल्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स आने चाहिए लाइक मोएंगेज, क्लेवरटैप. सीक्वल टूल्स आने चाहिए लाइक रीडैश, माईसीक्वल, लुकर. अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस टॉपिक्स सच एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड बेसिक एल्गोरिथम्स लाइक के मीन्स क्लस्टरिंग, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारी चीजें, राइट? एंड सैलरी रेंज इनकी क्या होती है? अब सैलरी रेंज मैंने ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स. अब प्रोडक्ट एनालिस्ट की सैलरी 6 लाख से लेके 14 लाख के बीच में होती है, प्लस 2 to 10 lakh rupees worth of ESOPs. So anywhere between 8 to 24 lakhs as the CTC can be done to a product analyst, right? And the core companies are Meesho, Boast Unicorns, Flipkart, Amazon. They will all hire a product analyst. यहाँ तक एक product analyst product नहीं बनाता, एक product analyst एक प्रोडक्ट मैनेजर को हेल्प करता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में. किस तरह एक पर्टिकुलर टूल से डेटा निकाल के उस डेटा को डिसर्न करने में हेल्प करता है एक प्रोडक्ट एनालिस्ट. डज इट मेक सेंस? नेक्स्ट इज एन एपीएम. अब एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर मूव्स टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीचर बिल्डिंग इन देयर जर्नी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एपीएम पहला वो बंदा होता है जिसको एक छोटा सा फीचर मिलता है टू एक्चुअली कैरी आउट द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फीचर बिल्डिंग, right? So a APM works on standalone features which are end-to-end part of a product life cycle. What I mean by that is कि एक छोटा फीचर लो जिसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक APM लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में अगर कोई APM होगा तो आई वुड बी टेलिंग हिम कि अगर तुम्हें लॉगिन फ्लो बनाना है तो पूरा एंड टू एंड लॉगिन फ्लो तुम बनाओगे. एंड APM इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फनल्स विच आर रिलीज्ड इन दैट फीचर. एक एपीएम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोडक्ट एनालिस्ट के साथ काम करता है लेकिन अपनी फनल को चेक करने की कोशिश करता है, राइट? तो द फीचर इज अ माइक्रो नगेट ऑफ अ प्रोडक्ट. यहां पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एक फीचर बन रहा है प्रोडक्ट का, राइट? जो एपीएम दिख रहा है. सो एपीएम डज नॉट हैव विजिबिलिटी ऑन बिजनेस लेवल मेट्रिक्स. बिजनेस लेवल मेट्रिक्स पे एपीएम की विजिबिलिटी नहीं होती है. इट इज अ माइक्रो व्यू ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ. दैट इज व्हाट एन एपीएम डज, राइट? तो एपीएम को कहां से शुरू होना चाहिए? इट्स एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल वेयर it is the first step of feature building. Second, they take care of the end-to-end life cycle of a feature. Second, they will look at the product funnels on which a feature is released. Third, they will look at it's a micro nugget of the product, and APM will not have visibility on top level business metrics. वहां पे visibility नहीं होगी. It is a micro view of product growth, right? उनके skills होते हैं. वायर फ्रेमिंग APM को आनी चाहिए, बिल्कुल. मैंने एक वीडियो वायर फ्रेमिंग पे किया हुआ है, उसको जाके चेक कर सकते हो. एबी टेस्टिंग एक
एपीएम को आनी चाहिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड कंपनी मेट्रिक्स एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स. So the salary of an APM ranges from anywhere from 6 lakhs to 30 lakhs in fixed to 5 to 20 lakhs worth of ESOPs. यानी कि उनका सीटीसी 11 लाख से लेके 50 लाख के बीच में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और द स्टार्टअप यू आर ज्वाइनिंग. अब चलते हैं पीएम पे. अब पीएम moves towards feature building as their first step of their life cycle. A product manager manages the feature, their development. Product manager for the first time, यहां पे तुम पहली बार सुन रहे हो, प्रोडक्ट मैनेजर जीटीएम भी देखता है. जीटीएम का मतलब होता है गो टू मार्केट, कि ये प्रोडक्ट बना तो दिया, अब इसको कस्टमर के पास कैसे लेके जाऊं. इट कैन बी थ्रू प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स, इट कैन बी थ्रू पेड मार्केटिंग, इट कैन बी थ्रू organic marketing, it can be through multiple ways. A PM, based on the PM type of PM he is, would be responsible not only for the leading metrics or the product metrics but also for the baseline metrics. For example, अगर मैं Flipkart का PM हूं या मैं Make My Trip का PM हूं, तो मैं रेवेन्यू भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि मेरी कितनी ट्रिप्स दिन की बुक हो रही है. मैं उबर का पीएम हूं तो मैं उबर की ट्रिप्स भी देखूंगा, मैं रेवेन्यू भी देखूंगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूं कि नहीं हूं. तो कंपनी का पीएनएल भी एक लेवल पे मैं देख पा रहा हूं. दैट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग. फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन अ पीएम इज इन्वॉल्व्ड, राइट. सो द पीएम इज द पर्सन हु राइट्स पीआरडीज फॉर फीचर्स टू गेट डेवलप्ड. एपीएम भी पीआरडी लिखता, लेकिन पीएम इज द प्राइमरी पर्सन हु राइट्स अ पीआरडी, राइट. सो एक एपीएम और पीएम में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्यू का डिफरेंस है. एपीएम एक छोटे से फीचर को देख रहा है, पीएम एक प्रोडक्ट को देख रहा है. एपीएम कंपनी के बेसलाइन मैट्रिक्स को नहीं देख रहा, पीएम कंपनी के बेसलाइन मैट्रिक्स को देख रहा है. एपीएम जीटीएम के बारे में नहीं सोच रहा, पीएम जीटीएम के बारे में भी सोच रहा है, राइट. एपीएम पीआरडीज या कॉन्सेप्ट नोट छोटे छोटे लिख रहा है, पीएम कॉम्प्रिहेंसिव पीआरडीज लिख रहा है, राइट. इनके स्किल्स क्या होते हैं? वायर फ्रेमिंग हो गया, एबी टेस्टिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ इन कंपनी मैट्रिक्स हो गया, प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स हो गए, पीआरडी राइटिंग हो गई. द सैलरी ऑफ अ पीएम कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 20 lakhs to 35 lakhs as fixed and to 10 lakhs to 30 lakhs in ESOPs, depending on the kind of startup you are joining. Rahul has asked how much experience in APM is to be required. Generally 1-1.5 साल में तुम पीएम बन जाओगे. अब आते हैं एसपीएम पे. SPM is the first non-individual contributor role. It's the first manager role. It's the first manager role for a APM, for a PM, right? So the SPM has the responsibility to mentor PMs to write effective PRDs. यहाँ पे SPM का role change हो रहा है. SPM की responsibility है कि मैं PMs को mentor करूं ताकि वो अच्छे PRD लिख सकें. And SPM has also the responsibility to write effective PRDs. And SPM also takes care of product funnels from a business vertical point of view. A business vertical point of view. What I mean by a business vertical point, like an SPM in Flipkart would take care of the product vertical end to end, like recommendations product in Flipkart. ये पूरा vertical है, ये एक product नहीं है. Product उस vertical के अंदर multiple products आ सकते हैं. And SPM is also a guardian of the culture of the PM team so that they can resolve conflicts among the PM teams and other teams. एक SPM की ये responsibility भी है कि अगर एक PM is facing trouble with the engineering team or the tech team, how do I resolve those conflicts? So SPM की क्या-क्या responsibility है? It's the first non-individual contributors role for a PM. Number one, they have the responsibility to mentor PMs to write effective PRDs. Number two, they have the responsibility to write effective PRDs. Number three, they have the responsibility to take care of product funnels from a business vertical point of view. Number four, an SPM is also the guardian of the culture of the PM team, where they would help resolve conflicts among the multiple teams that you're looking at, right? Within the PM team and also between the PM team and other teams. यहाँ पे स्किल्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पीएम बिकॉज एज अ पीएम यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. मैं लिंक्डइन पे इतना लिखता क्यों हूं? क्योंकि वो मेरे को हेल्प करता है टू राइट बेटर स्टोरीज. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फनल्स. थर्ड, वायर फ्रेमिंग. फोर्थ, एबी टेस्टिंग. फिफ्थ, प्रोडक्ट एनालिटिक्स. सिक्स्थ, राइटिंग इफेक्टिव पीआरडीज. Also 7, if you understand a little bit about tech like APIs, system design, that is also very helpful. Tech for PMs is also important. There are very good books where you can learn tech for PMs like effective APIs,
Like there is Swipe to Unlock is a very good book. Then Deepak Singh has written another very book Tech Simplified. You can go and check it out. It is also very important. So the salary of an SPM ranges from 25 lakhs to 45 lakhs plus 60 to 80 lakhs worth of ESOPs, depending on the company you are joining. So anywhere between 85 lakhs to 1 crore 20 lakhs as the CTC you can get as an SPM if you are going to a good startup. Okay, so Shruti has a question. Hi, I want to ask with 5 years of as PM, I am doing all this. What more is needed for an SPM post? Okay, so Shruti, the one thing that you have to understand from an SPM perspective is you need to start working on one-on-ones and start doing mentoring. And mentoring is very, very important for someone who wants to become a senior product manager, right? So if there are a lot of systematic methods of doing mentoring, like doing effective one-on-ones, calling the team, making their accomplishments visible in front of everyone in the company, multiple ways of doing one-on-ones, trying to understand where they are facing conflicts, trying to understand what are their aspirations. All of these things you have to do in terms of becoming an SPM. The next part is called the GPM, a group product manager. अब ये line याद रखो. This is a line which is going to become a stellar line. A group product manager is the guardian of product culture in the product team. A group, फिर से repeat करता हूँ. A group product manager is the guardian of product culture in the product team. It is more of a manager role than a PM skill set role, right? A group product manager's responsibility is to abstract out the ambiguity in product decisions. For example, a group product manager, अब देखो एक कंपनी में जब तुम एपीएम हो, एपीएम में तुमने फीचर बनाया, प्रोडक्ट मैनेजर में तुमने प्रोडक्ट बनाया, एसपीएम में भी तुमने एक वर्टिकल को देखा. अब क्या होता है, अब कंपनी को ग्रो भी करना है, तो कंपनी ग्रो करने के लिए दूसरे वर्टिकल्स को भी देखती है, बोलती है कि मेरे को इस वर्टिकल को भी देखना है, उस वर्टिकल को भी देखना है. नाउ इट्स एन एम्बिग्यूअस डिसीजन. फॉर एग्जांपल, बाइजू अगर कल बोले कि यार मैं टेस्ट प्रेप सेगमेंट, या बाइजू बोलती कल से मैं ओके तमिल पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, तब बाइजू बोलती है मैं तमिल पढ़ाना शुरू कर रही हूँ. नाउ दिस इज अ वेरी एम्बिग्यूअस डिसीजन. अगर ये गलत चला गया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ क्रंच, लॉट ऑफ एफर्ट दैट विल गो देयर, एंड इफ इट फेल्स, इट फेल्स. सो अ जीपीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे पकड़ूं और इसको एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दूं कि यार कि हमारे तमिल कितने यूजर्स हैं, उन यूजर्स में से कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन्स में हैं, स्मार्टफोन्स में कितने यूजर्स हैं जो कि तमिल सीखना चाहते हैं, उसके लिए पे करेगा कोई कि नहीं करेगा, अगर पे करेगा तो व्हाट विल बी देयर टिकट साइज, अगर उनका टिकट साइज अच्छा है तो क्या ये स्केलेबल है, क्या मैं इसको 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, क्या मेरी सर्विस ऑपरेशनली हैवी होगी या नहीं होगी. सो शुड डाउटनट मोनेटाइज डाउट सॉल्विंग, दिस इज लाइक अ वेरी एम्बिग्यूअस डिसीजन. डाउटनट आज की डेट में अपने डाउट सॉल्व फीचर के लिए कुछ नहीं लेता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. But should they monetize it tomorrow? That's a GPM's call. A GPM should come up with a plan and helps understand. A GPM also works a lot on conflict resolution, one-on-one growth, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे भी जीपीएम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, जब तुम विजन देखते हो, विजन से तुम गोल्स पे आते हो, गोल्स से तुम एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि इस साल मुझे ये 3 चीजें करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी माइट टुमारो से कि यार हम लोग बहुत पैसा बर्न कर रहे हैं, हाउ डू वी इफेक्टिवली बिकम मोर प्रॉफिटेबल. अगर स्विगी को करना है तो ये जीपीएम डिसाइड करेगा कि यार की प्रॉफिटेबिलिटी को करने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन लाना चाहिए, जैसे उन्होंने स्विगी वन शुरू किया है, हमें एक सब्सक्रिप्शन लाना चाहिए, हमें इंस्टामार्ट ओपन करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अ जीपीएम हैज कीन आई ऑन कंपनी लेवल मेट्रिक्स. जीपीएम को कंपनी के बेसलाइन मेट्रिक्स बाय हार्ट याद होते हैं, so that he can take it down or she can take it down to the leading or lagging metrics and eventually take the company, build the strategy for growing that vertical very continuously and in a sustainable manner. A GPM's role is also to build product culture, which is the growth of PMs in their individual roles so that they can become team leading assets. मतलब प्रोडक्ट कल्चर का क्या मतलब होता है, जहां पे मैं खाली प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि एक पीएम की एस्पिरेशन क्या, कल को किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो क्या मैं एज अ जीपीएम हेल्प अ पीएम टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर, टू बिकम अ बेटर ऑपरेशंस गाय. सो अ जीपीएम's responsibility is fourfold. Remove the ambiguity in product decisions. Second, resolve conflicts. Third,
keep a keen eye on company level metrics. Fourth, take care of the product culture in the company. Unke skills, effective communication, effective vision and strategy building, setting PRD templates, setting one-on-one templates, right? And unki salary anywhere between 55 lakhs to 80 lakhs hoti hai, with 70 lakhs to 1 crore of ESOPs based on the company or startup that you are looking at. So this is what a GPM does. आज हमने क्या सीखा कि PM क्या होता है, PM के स्किल सेट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या होते हैं. थैंक यू folks.